This is the first one book. This is the book, as you can see, Devil's Advocate by Karan Thapar. This book was recently released, so I ordered it. I really like the appearance of this one. It is really amazing, the best one still I got. I have one more book similar to this, that is, the name is of that book is Alibaba. If you want to show that. So, I have that right here. You can see. Just gonna open it if you wanna take a look. How did I open it? How did I mess that up? Okay, from the side. Oh, sorry. From the side it was to be opened. This one. It's also had the hardbound packing, but we are not here to talk about that. We are here to doing the unboxing of those books which we have ordered today. So this is the first one. Let me keep it here. Packaging we don't need. In this we have 3 books. These are the 3 you can see. First one is Chetan Bhagat, The Girl in the Room 105. I didn't listen about this much. ये जो बुक है इतनी ज़्यादा इसके बारे में रिव्यूज़ वगैरह है, फेवरेट कुछ तो नहीं दिया। चेतन भगत की कुछ जो दूसरी बुक्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी उनके बारे में रिव्यूज़ अच्छे आए हैं। इसके बारे में इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं थे, बट बिकॉज मैंने चेतन भगत की हर बुक पढ़ी हुई है तो वाई शुड लीव दिस वन, इट्स ओनली $100, so I ordered it. Let's remove the packing. Okay, so this is okay. Now we don't need this. Keep it aside. This one is there. Keep it here. You can see this one. This one is Republic by well-known Plato. So this one, actually I got this one on Lightning Deal. It was Lightning Deal from Amazon. It cost me less than $100 maybe, or what? Maybe more than $100. I don't know the real pricing of about that. But here is the pricing list of that. So the Republic cost me 100 rupees. So this one only cost me 100 rupees. It's simple enough, and my friend Shubham also said that this is going to be good one because he heard a lot about this book. He study about the authors and the books for the competitive examination. So I did it also. तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है. So that is the one here, and the last one is this Mr. N.K. Gandhi आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब काफ़ी दिनों बाद मैं कोई इंडियन ऑथर और इंडियन लेजेंड हम जिनको कह सकते हैं, हमारे देशपिता महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ेंगे. और इस बुक की प्राइस भी काफ़ी लो थी. आई गॉट इट फॉर 155 आई गेस. लेट मी चेक. Yes, I got it for 155. You can see here, if you cannot see, yeah, 155. And this one I got for 417 rupees. This one is 417. This one is 100. This one is 155. This one is 99, and this one is Mr. M.K. Gandhi. Let me put it here, or where? Let's put it here. Okay, I have my water bottle with me, so that's all. So these are the 4 books. Okay, is it lighting? Some problem? No problem? Okay, that's good. So all this is good enough. You don't need this. Keep it aside.
सो ये थी इनकी अनबॉक्सिंग। अभी हम शुरुआत करेंगे इसी बुक से बिकॉज हमें इनको रैप अप करना है। सो वी हैव गॉट द थिंग विद अस, जो हमारे पास है वाइट कवर। मैं अपनी बुक्स को हमेशा बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में रखने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं जब भी कोई नई बुक खरीदता हूँ तो उसको सबसे पहले मैं अपनी उस बुक को कवर चढ़ाता हूँ और उसको बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देता। तो ये मेरे शुरू से ही मैंने ऐसा किया है। सो आई विल डू द सेम विथ ऑल दीज बुक्स ऑल्सो। और इन बुक्स के साथ मुझे एक दिक्कत ज़रूर है, मैं अमेज़ॉन से बोलना भी चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इन चारों बुक्स के साथ कोई भी बुक मार्कर नहीं भेजा, विच इज़ रियली सैड। मैंने अब तक जितनी भी बुक्स खरीदी हैं एटलीस्ट उनमें से फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन किसी से भी खरीदी हैं तो उसमें से एटलीस्ट एक आध तो बुक मार्कर वो भेज देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बुक मार्कर्स हैं ऑलरेडी, बट यू नो वेन एवर यू परचेज अ न्यू बुक यू एक्सपेक्ट दैट दे शुड बी गिविंग यू एटलीस्ट 1 or 2 न्यू book markers, because every book should have its own book marker, as I think, because वो उसके साथ एक अलग पर्सनल टच हमको देखने को मिलता है। बट अभी तक तो अमेज़ॉन से मैंने काफ़ी बुक्स खरीद चुका हूँ, बट अभी तक ऐसा कुछ पर्सनल टच तो मुझे देखने को नहीं मिला है। बट उन्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। आई मीन लाइक आप जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, लाइक मैं अमेज़ॉन से ओनली बुक्स खरीदता हूँ, सबसे ज़्यादा बुक्स ही खरीदता हूँ और कुछ नहीं खरीदता। तो they should identify their customers and things like they should give them some extra rewards or some points, things like that, तो जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े कि हम और ज़्यादा पढ़ने के लिए इच्छुक हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही होता हूँ, बट ओके। तो शुरुआत करते हैं हम इसके साथ और we will be wrapping this one really soon, so see you in the 1 2 3